till the end for the exclusive interview of Duare Sarkar, Duare Russian and Duare murder. हम दुआरे सरकार है, दुआरे राशन दे रहे हैं, यहाँ तो दुआरे खून हो रहा, दुआरे गोली चल रहा, दुआरे बम चल रहा, तो हम कैसे मानते हैं कि मोदी और ममता एक ही नहीं है? Good evening everyone, myself SITAL Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. News number 1. An Indian student from Barnala in Punjab on Wednesday died in Ukraine where a war is raging following the invasion of Russian military. Chandan Jindal, 22 years old, was studying at Vinnytsia National Pyrogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine. According to available reports, Jindal was admitted in emergency at a hospital in Vinnytsia, Kyievska Street 68 after suffering an ischemic stroke. He breathed his last earlier in the day. News number 2 from Rupnarayanpur. According to Papun Pal, the tragic consequence is the well-known physiotherapist Somin Pal of Rupnarayanpur. Somin's body was recovered on Wednesday in the Madhai Chak area of the bypass road connecting Samdhi to Ithora number 2 National Road. It has its own physiotherapy center at the supermarket adjacent to Rupnarayanpur Vegetable Market. Their home is in Anamikapalli, but they lived with family in a rented house in Rupnarayanpur, Amdanga. He worked as a technician in a famous nursing home on Asansol SB Gorai Road. According to sources, his wife contacted the nursing home as he did not return home on the time after completing his work at the nursing home. But after a long time, not finding him, everyone started searching in different police stations and acquaintances. At the nursing home, Dr. Nirjhar Majhi himself got out of the car and contacted the police, but no trace of him was found at night. Meanwhile, his body was found lying in Madhai Chak area on Wednesday morning. His bike also fell there, said Pabitra Gangopadhyay, inspector in charge of Salanpur police station. Salanpur police sent the body to Asansol District Hospital for autopsy. Somin Babu was well known in the area as a tender young man. He and his brother and even his father could make very good status before setting up a physiotherapy center at Rupnarayanpur. Somin used to work in a large private hospital in Durgapur, and his wife regularly assisted him in physiotherapy. He was also skilled in sculpting. Stay with us till the end for the exclusive interview of Duare Sarkar, Duare Russian and Duare murder. हम दुआरे सरकार है, दुआरे राशन दे रहे हैं, यहाँ तो दुआरे खून हो रहा, दुआरे गोली चल रहा, दुआरे बम चल रहा, तो हम कैसे मानते हैं कि मोदी और ममता एक ही नहीं है? Stay with us for more news after the break. TVS, PSJ, TVS, Play Smart, Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. News number 3. The Ukrainian army says that enemy troops have attacked a hospital in Kharkiv, the city where an Indian student was killed on Tuesday. Amid shelling by the Russian army, Russian airborne forces have landed in Kharkiv, Ukraine's second largest city, as Russia's invasion rumbles on into a seventh day.
The Ukrainian army has claimed that enemy troops have attacked a hospital in the city. Kharkiv is also the city in which an Indian student was killed on Tuesday amid shelling by the Russian military. Stay with us till the end for the exclusive interview of Duare Sarkar, Duare Russian, and Duare murder. हम दुआरे सरकार है, दुआरे राशन दे रहे हैं, यहाँ तो दुआरे खून हो रहा, दुआरे गोली चल रहा, दुआरे बम चल रहा, तो हम कैसे मानते हैं कि मोदी और ममता एक ही नहीं है? Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। News number 4. The Indian embassy in Ukraine's capital, Kyiv, has shut down, and the ambassador and the staff are on their way to the western part of the country. Sources have said India has been advising students and others to move to the western borders, a process that has been extremely challenging given the security situation. The embassy in Kyiv shut down after it did its best to ensure that there are no Indians left in the city. Satellite imagery indicates that the city imminently faces a large incoming Russian invasion force. News number 5. Naveen, who died in the attack in Kharkiv, was a native of Chalajeri village despite scoring 97% in PUC. My son could not secure a medical seat in the state. It became inevitable for us to send him to Ukraine for studies. But we lost him, a distraught Shekharappa said, referring to the tragic death of his son Naveen in Ukraine. Naveen, a fourth-year MBBS student who died in the Russian attack in Kharkiv, was a native of Chalajeri village in Ranebenur Taluk of Haveri district. Mr. Shekharappa, a mechanical engineer who took up farming after retirement, and his wife Vijaya Lakshmi were inconsolable as relatives, well-wishers, and political leaders continued to visit them on Tuesday after the news about their son's death spread. Naveen was a bright student from the beginning. However, as the family could not afford the cost of medical education here, he was sent to study medicine in Ukraine. His cousin Gangadhar Gyanogodhar recalled from the resident of Naveen, Venkatesh Vaisyar, whose son Amit also studies in Kharkiv, lambasted the politicians for what he termed as their apathy towards the stranded students. The village residents and others appealed to help bring back the mortal remains of Naveen and to also help the remaining students return safely.
News number 6. Here we have an exclusive interview with the father of Salahin Sajid of OK Road Railpar, Asansol. She has reached Lviv railway station at around 2:45 p.m. Her father told our reporter. Now it will be decided very soon from which side she will cross the border. His father is very much anxious about her daughter. Here is the interview with him. It has been conducted by Twinkle Barnwal. आपका इंट्रोडक्शन कि आप यहाँ पर कहाँ पर काम करते हैं या कौन सा चीज़ चलाते हैं, ये खाली आप बता दें। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अख्तर, रेलपार ओके रोड में रहता हूँ। मेरा एक स्कूल चलता है नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, और मैं खुद एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी बेटी सालिहीन साजिद, जिसे गुज़श्ता साल 8 अप्रैल 2021 को मैं खुद ले आकर खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन। किसी के माध्यम से कराया या खुद? दिल्ली के एक एजेंट है जिसका नाम है सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, उसके जरिए ही जो है हम लोग पूरे काम को अंजाम दिए। वहाँ पर कितना बोला गया कि आपको कितना फीस लगेगा लगभग 4 साल में? 6 साल का वहाँ कोर्स है। अच्छा। 6 साल में नियर अबाउट आपको 40 लाख रुपए खाना पीना रहना और ट्यूशन फीस लेके सब लेके लग जाएगा। तो हर बार वो आती जाती है वहाँ लगता है? जब तक के वो जब गई है तो अभी नहीं आई है। इसी बार हम लोग जून महीने में छुट्टी होने वाला था। अच्छा। जून महीना में 10 जून से लेकर 31 अगस्त तक का छुट्टी था, तो हम लोग टारगेट लिए थे कि उसको लाएंगे। ऐसे मेरा प्रोग्राम था कि हर साल एक बार उसको लाएंगे। सालीन यहाँ पर किस स्कूल से पढ़ी है? DAV पब्लिक स्कूल। ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है? CBSE बोर्ड से। CBSE बोर्ड से की। अभी आपका उसके साथ रब्ता हुआ है या नहीं? लास्ट आज 3 बजे भोर में लास्ट उससे बातचीत हुई है। वो लोग जो है खारकिव शहर से निकली है, ट्रेन के जरिए बॉर्डर के तरफ जा रही है। बॉर्डर मैंने किस तरफ? पोलैंड की तरफ? वो तो कुछ बताई नहीं थी, वही कि हम लोग लास्ट स्टेशन पहुंचने के बाद आपको बताएंगे कि किस बॉर्डर के तरफ जा रहे हैं, तो फिर अब क्लियर होगी। अच्छा, आपसे उनसे बातचीत हुई है? 3 बजे भोर। उसका कोई वीडियो है आपका? वीडियो ऐसा कुछ वैसे कोई वीडियो कॉल नहीं करते हैं? अच्छा, तो वहाँ उसको क्या क्या पोजीशन है, उन लोगों को खाना पीना मिल रहा है या नहीं? खाना पीना सब चीज़ तो अपना है। अच्छा। तो खाना पीना का जो क्राइसिस है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से ऐसा कोई हेल्प नहीं है। खारकिव रेलवे स्टेशन से आई है? हाँ, चल चुकी है। 3 बजे भोर में कल 3 बजे वहाँ के टाइम के मुताबिक 3 बजे ट्रेन पकड़ी थी शाम में, कल शाम को। 3 बजे भोर में, यहाँ 3 बजे के मुताबिक हमसे बातचीत हुई है। तो वैसे अभी हम लोग ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो बोली कि हम लोग पहुँचने के बाद आपको फ़ोन करेंगे। तो चूँकि अभी हम फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन टावर नहीं है या नेट नहीं है, इसकी वजह कर जो है कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन लोगों का टीम में 16 लड़का लड़की है। 16 लड़का? सब यही क्या आसनसोल के हैं? नहीं, सब इंडिया के ही है, अलग अलग। आसनसोल के कौन कौन है? सिर्फ अकेले ही। सिर्फ अकेली आपकी बेटी है? पढ़ने में तो बहुत अच्छी रही होगी। लगा शुक्र है, ठीक है। नहीं, हाँ, अलग शुक्र। और कोई नहीं बताया कि क्या असुविधा हो रहा है आने में या? नहीं, अभी तक तो ऐसा अभी से कुछ नहीं बताया आपको? हालांकि हम एक अलग से टिकट भी करा के रख चुके थे, 27 तारीख का था, लेकिन वो कैंसिल होकर एक्सटेंशन हुआ है। तो 3 मार्च का उस डेट को हम एक्सटेंशन कराए हैं। अच्छा। लेकिन नहीं लगता है कि वो भी जो है चालू हो पाएगा। 3 मार्च उस टिकट में कितना लग रहा है अभी? पहले टिकट का दाम जो है 20,000 22,000 रुपये होता था, अभी मैं 64,000 रुपये में टिकट। 64,000? 3 गुना? हाँ, 64,000 में टिकट करा कर रखा हूँ। आपकी कितनी बेटियां हैं? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का? लड़का क्लास 5 में पढ़ता है और लड़का छोटा है? DAV मॉडल में। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैंने अगर आपको और कोई चिंता हो रहा है या घर वाला लगातार आप लोग उससे संपर्क में है? संपर्क में तो है, संपर्क में रह के थोड़ा शांति है कि हाँ बातचीत हो रही है, लेकिन चिंता तो है कि जितना जल्द हो सके वो एरिया से निकल के घर आ जाए। अच्छा, आपको आपकी बेटी ने ये नहीं बताया कि उन लोग को इंडियन एम्बेसी कब बताया कि खाली करना होगा? नहीं, ये बात नहीं बताई। ये बात आप नहीं कर पाए? चलिए ठीक है। News number 7. Mr. Akhtar talked with us about the system of selection for education for being a doctor. He clarified why students go there. कंडीशन क्या है? देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड का सिस्टम यही है कि मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कि आप जिस देश में हैं
वहाँ का जो क्वालिफाइंग सिस्टम है उसको क्वालिफाइंग करके आपको जाने पड़ेगा, वहाँ उसका सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो जो भी बच्चा वहाँ जाता है वो नीट क्वालिफाई करने के बाद ही जाता है, और वो लोग भी जो है नीट क्वालिफायर को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है। एक दूसरी बात यह, वहाँ ज़्यादा बच्चा जाने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो वजह है फीस। वहाँ पर नियर अबाउट 40 लाख के अंदर में उसका पूरा मेडिकल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका 3 गुना पैसा लगता है। हम खुद में जब अपनी बच्ची का दाखिला के लिए यहाँ कोशिश किया तो 3 कॉलेजेस में गया। IQCT दुर्गापुर गया तो वहाँ के डायरेक्टर से मेरी टेबल टॉक कोई बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख रुपये लगेगा। सनाका में बात हुई 82 लाख रुपये लगेगा। गौरी देवी में टेलीफोनिक टॉक हुआ था, वो बोला था 92 लाख रुपये लगेगा। तो उसी चीज़ को अदर कंट्री 25 लाख 16, रसिया 16 लाख रुपये में करा देता है आपको, बांग्लादेश 26 लाख रुपये में कराता है। तो इस तरह का जो फ़र्क है, इस फ़र्क की वजह कर ज़्यादातर बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, आपका यूक्रेन है, इन जगहों पर जाके तालीम हासिल करते हैं, ताकि कम पैसा में ज़्यादा बेहतर से बेहतर एजुकेशन भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है। वहाँ की जब बच्ची आपके डॉक्टरी का डिग्री लेकर आएगी तो यहाँ पर ये लोग मान्यता देगा। यहाँ पर भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम ये है कि यहाँ का एक लोकल एग्ज़ाम होता है, उस लोकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, आपको नाम परमिशन मिल जाएगा। ठीक है। Stay with us till the end for the exclusive interview of दुआरे सरकार, दुआरे राशन and दुआरे मर्डर। हम दुआरे सरकार है, दुआरे राशन दे रहे हैं, यहाँ तो दुआरे खून हो रहा, दुआरे गोली चल रहा, दुआरे बम चल रहा, तो हम कैसे मानते हैं कि मोदी और ममता एक ही नहीं है? Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a sure road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. News number 8. Senior leader of CPM Comrade Aftab guessed that Modi government failed to bring back students. He appealed to arrange more flights and for safe passage. चाहते हैं कि हमारे यहाँ के आसनसोल के, दुर्गापुर के, चितरंजन के भी बहुत सारे बच्चे यूक्रेन गए हैं और उन लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बच्चों को वापस लाने में सफल रही है या असफल है? देखिए, यूक्रेन में जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं इंडिया के, लगभग नियर अबाउट 16,000 स्टूडेंट हैं और 4,000 वर्कर हैं। तो मोदी गवर्नमेंट लाने में असफल है इसलिए कि ये लोग इलेक्शन में बिजी है, यूपी के इलेक्शन में बिजी है, और ये लोग बोलते हैं कि हम 4 मंत्री भेजे हैं, 4 मंत्री भेजे हैं, 16 मंत्री आपका इलेक्शन में बिजी है। तो ऐसा होता है थोड़ी। और दूसरी बात यह है कि आपका यह है कि आपने पहले एडवाइजरी जारी नहीं किया था, अगर जारी कर देते तो बच्चे अपने खुद आ जाते हैं। आपको पता था, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन यहाँ पर पूरा दायित्व लेना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, कि वो बच्चों को ला नहीं पाए। जिस तरीके से इनको पता था कि लॉकडाउन होगा, इनको पता था पहले से कि महामारी हो रहा, कोरोना आने वाली है, ये कुछ एक्शन नहीं लिया। उसी तरीके से देखिए आज लोग पैदल चल रहे हैं। जिस टाइम कोरोना से पैदल चल रहे थे उस टाइम कई मान लोग स्टूडेंट लोग हमारे पैदल चल रहे थे। और हमारे जो वहाँ पे हैं, जो बॉर्डर है, जो पोलैंड का बॉर्डर है, सारे लोग को ले रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनको भगा दे रहे हैं। तो इंडिया के लोग को नहीं ले रहे हैं, इंडिया के स्टूडेंट को नहीं ले रहे पोलैंड बॉर्डर पे, मतलब सारे कंट्री को ले रहे हैं, लेकिन इंडिया के लोग को नहीं ले रहे। पता नहीं क्या है, ये हम नहीं जानते, ये पॉलिटिकल क्या मामला है, ये हम भी नहीं जानते। डिप्लोमेसी में भी लोग फेल है, क्योंकि हमारा रशिया भी हमारा फ्रेंड था जी। और यूक्रेन में जहाँ लड़ाई हो रही है उसके मामले में इनका जो विचार है स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इस मामले में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये आप बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है, और ये यूक्रेन को भी बोलते हैं
तो जहाँ तक है कि मसला है कि ये बोले थे कि यूक्रेन का हम साथ इसलिए नहीं देंगे, जैसे आपने बताया कि ये कश्मीर का मसला पे हमारे साथ नहीं दिया, तो ऐसे डिप्लोमेसी होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, हम अपने बच्चे को और अपने स्टूडेंट को लाने की कोशिश करेंगे, वो हमारा भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है। यही हम चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे और बच्चियों को लाने की कोशिश करें। युद्ध का माहौल बहुत खराब होता है, और युद्ध जो बम गिरता है या गोली गिरता है तो कोई कंट्री या कोई स्टूडेंट या कोई जात कोई देख के बम नहीं गिराता, वो किसी को भी लग सकता है। जैसे हमारा वही नवीन कुमार एक शहीद हो गया, तो हम चाहते हैं कि उस तरीका का और ना हो, और स्टूडेंट अपने घर अपने माँ बाप के पास आ जाएं खैर खूबी से। ये हम नहीं चाहते हैं। जैसे हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो हैं कि वो लोग बॉर्डर पर ही फंसा हुआ है, बॉर्डर अभी तक पहुंच नहीं सका है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग बॉर्डर में फंसे हो तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने एम्बेसी से जल्दी से जल्दी एम्बेसी के साथ कॉन्टेक्ट करके और वो बच्चे को निकालने की कोशिश करें। यही हम चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जो बच्चियां हैं उनको कैसे लाया जाएगा, प्रतिक्रिया उनको निभाना पड़ेगा। आपकी पार्टी इस मामले में कुछ कर रही है क्या? देखिए, हमारी पार्टी इस मामले में अभी तो हमारे पार्टी का तो हाल अभी देख लीजिए कि हमारे जो बंगाल में जो हाल हो रहा है, जिस तरह से नवीन कुमार शहीद हुआ, वहाँ पे हमारे यहाँ भी एक छात्र है जो अनीश खान, उसको पुलिस गोली मार दिया, ये छत से फेंक दिया। Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim, Bardhaman. For more information, contact 98328-24975. News number 9. As a result of the dispute in Durga Temple under Asansol Dakshin Police Station on Wednesday morning, the enraged police in front of Dakshin Police Station accused a huge commotion. The police rescued him with great difficulty. The rioters alleged that Badku and some people in the Durga temple area are doing dabangi in the area. After this, in the night itself, the people had beaten them badly, after which he ran away and came to police. This morning, the people arrived at the police station and demanded action against him. Angry people beat him in front of everyone, while the accused have described the allegations against him as baseless. Stay with us for more news after the break. Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. News number 10. Dr. Anirban Roy and his wife, Jhuma Roy, are staying in this house temporarily. No one was at home last night due to illness, taking advantage of which the criminals carried out the incident. This morning, the housekeeper informed Dr. Anirban Roy that the thugs broke the back window of his house and stole it. The doctor said that after receiving information about 40,000 rupees in cash and silver utensils worth about 60,000 rupees, the police of the police station has started investigation in the morning. Stay with us for more news after the break. Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. News number 11. Of the estimated 20,000 Indians, including students who were trapped in Ukraine at the start of the Russian offensive there, 60% have crossed Ukrainian borders and are safe with efforts underway to rescue the remaining people, the center told the Kerala High Court on Wednesday. The central government has told the High Court that under Operation Ganga, in addition to commercial aircrafts, Indian Air Force flights
have also been pressed into operation to evacuate the Indians who have crossed into Romania, Poland, Hungary, and other neighboring countries of Ukraine. With regard to the students stranded in war hit Kharkiv, the government said that situations there are volatile as the city was under heavy shelling, and it was therefore advisable for our students to stay put wherever they are for their physical safety. As and when the situation improves, the students in Kharkiv will be evacuated on priority in a situation suitable matter. Our mission in Kyiv is in touch with most of the students and has been trying to make available provisions where possible. SMS of the moment. The war will end. The leaders will shake hands. The old woman will keep waiting for her martyred son. That girl will wait for her beloved husband. And those children will wait for their heroic father. I don't know who will sold our homeland, but I know who paid the price. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.